आज हैदराबाद से आ रहा हूँ मैं। कल रात में तो पूरा 10,000 लोग थे हैदराबाद में. Not only Hyderabad, across India we are having the shows. Whether it is Surat, Ahmedabad, Pune, Calcutta, Chennai, Bangalore. All these places we are having. So, but Bombay is Bombay. I'll tell you one story actually, a real life story. Once upon a time long back, I met Mr. Rajesh Khanna in an aircraft by chance. So he was telling me, मैंने पहचाना उनको एकदम कुर्ते में थे. You are Mr. Thumbs Up Reddy. बोले तो मैं yes sir, honor to meet you. I was very happy to meet him because I was his big fan. So he told me my name is not Rajesh Khanna, my name is Jitin, and they called me Rajesh Khanna. Mr. Reddy, I have seen your hoardings across the city. You are doing a good job. But remember one thing, if you make it in Bombay, you can make it in any part of the world. अभी तक मेरा माइंड में अभी घूमते रहता हूँ. He said if you can work hard and make it big in Bombay, because Bombay thinks big. And so, yeah, what he said was Bombay thinks big. If you want to really make it in any part of the world, first succeed in Bombay and give your best shot. Bombay will never give you a second chance. कभी मेरा माइंड में दिमाग में घूमते रहता है बिकॉज वो तो बड़ा आदमी, आइकॉनिक फिगर, सुपरस्टार ऑफ द so many decades actually, ruled the hearts of so many millions of people. When he has told me in a few minutes, when he met me in the flight, he was sitting next to me. So then I decided to not only start one club. There was the beginning of the first club in Andheri, Abhi Khandi village. Then we were spreading in the western markets, Surat, Ahmedabad, Pune. So I think Bombay is like a pulse of the country. So Bombay, if you are successful, you can be successful in any part of the world. That is a fact. And people in Bombay, they've got certain work ethics which is very difficult for other cities to actually follow. And like today, the entire media of Bombay is here. I'm really honored for that. Really thankful for the entire support what media is extending to the brand country club all these years. We started about roughly 30 years back, and today we started with 400 members. Today we are roughly about 4.5 lakh members across the country and around the world. And we are not only the biggest club players, but we are, apart from the clubbing, we have got about almost 200 franchises clubs as well as affiliates. And a lot of health club brands are also associated with us. And also in the country, without naming just a few people, we are the biggest company which gives the largest number of holidays. So that is very important to note, because in this time, recently, like I was traveling today, Hyderabad airport was packed. Airlines were packed. Vistara came, Vistara was sold out. Bombay में उतरते totally packed. JW में Marriott से लेकर यहाँ तक आने के लिए normally आधा घंटा लगता. आज 1.5 hours हुआ आज. So you can understand the growth that is happening in the country. The economy is really growing. Tourism is really growing in a huge manner. I think this is the right time for the people to enter this kind of an industry, because this industry not only develops tourism, but it gives a lot of employment. In our own company, we give about employment to about 5,000 people. 5,000 लोगों को employment देते. So you can understand the kind of direct employment and also the kind of indirect employment which is leading to this kind of a major growth. And India, you must have seen under the last 10 years, has really zoomed up to a different orbit altogether. Today we are regarded as one of the most powerful nations, a nation that to reckon with, in par with US and UK and in China. So we are second to none in this economy or in this industry. So I think this is a time for us, all of us, to realize that. आप ये cell phone का देखिए recently, 1.5 lakhs, 2 lakhs cell phones नहीं मिल रहे, it's all closed. So there is a kind of money that is the economy is holding. So I mean, membership is a very small amount, basically when you compare. So, but in this kind of a hostile environment, we came up to a level playing field, and now the only thing that can happen to brand country club is growth. Country club is like a bottomless pit. The industry is like a bottomless pit, and the only way going forward is growth. So I'm sure, my dear friends, by the time we meet next, we will be in a different league altogether, and there are a lot more opportunities that are coming our way. And now next is we are coming up with Asia's biggest New Year bash. Every year we have a New Year bash. So this year also we are coming out. This will be the next big thing.
that will be happening, and I'm sure, I think media will be proud of our company's achievement, and I wish you all the luck. Thank you. Any other question? Post-COVID, we have seen कि पब्लिक बहुत ज़्यादा फेस्टिविटीज में पार्ट नहीं ले रही थी लास्ट ईयर. रिजल्ट बहुत ज़्यादा है. रिजल्ट पब्लिक काफ़ी ज़्यादा आ रही है. नवरात्रि फेस्ट में देखा जाए तो कितना बढ़िया है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या क्या है. नहीं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 साल तो कोविड की वजह से रुक गया पूरा. सो उसके बाद में पिकअप हुआ, वैसा पिकअप हुआ कि अभी पीपल वांट टू गेट आउट ऑफ द होम्स. हैदराबाद में मैं बोल रहा हूँ, मेरे खुद खानदान में मेरा भाया मेरा बहना दे हैव मूव्ड टू द फार्म हाउसेज ड्यूरिंग कोविड टाइम्स. ऑल माई फ्रेंड्स. अभी कोविड की वजह से बहुत इफेक्ट हुआ. सो नो यू हैव टू रेशनलाइज इट दिस वे. प्री कोविड, पोस्ट कोविड 2 years गैप आया था. वाज लाइक स्टेइंग इन एन ICU, स्पेशली इन अवर इंडस्ट्री. पूरे क्लब्स क्लोज थे, बट फिर वी हैव कम बैक विद बिग वेंजेंस. And now you see all the clubs are getting packed. People are going on holidays. Holidays like Wildlife Resort, Bandipur is packed. Even if I call up myself that I am coming there, the rooms नहीं है sir बोलते हैं. उतना booking चल रहा. तो मैं बोलने का market is very heated. It's a heated market, and I am sure, I think all the sectors connected with tourism will greatly benefit. I mean, and Country Club being a catalyst of this, I am sure, I think we are also looking for exponential growth. We are targeting to become 1 million members in the next 4 or 5 years with strategic alliances and global partners. So let us see how we achieve that. Because मैं जब शुरू करेगा 400 मेंबर आना मुश्किल है बोल के बोले. अभी मैं 4.5 लाख मेंबर्स बोल के बोल रहा हूँ ना. तो the journey has been very, very strong, very focused, and with a proper direction and a good team. More than anything else, good team is important to carry out your vision. Vision रहता पूरों को रहता, ideas पूरों को रहते हैं, but उसको विजन जमाने के लिए रिक्वायर अ गुड टीम, एंड वी हैव गॉट अ फैंटास्टिक टीम. आई शुड थैंक टीम कंट्री क्लब आल्सो फॉर दैट. फेस्टिवल्स भी चलने वाले हैं. अभी नवरात्रि है, फिर दिवाली है, फिर न्यू ईयर है. तो कंट्री क्लब किस तरीके से लोगों को कुछ नया कुछ देने वाले हैं? अब दिवाली तो ऑल ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, न्यू ईयर, संक्रांति, all these festivals are going on in the 100%. Now we are every festival we are promoting in its own way. All the families participating. If you see after some time, the crowds will come. We will find nana, nani, beta, beti, then grandchildren. So it is going on to 3 generations actually. Baisakhi, Lohri. In fact, Baisakhi, Lohri के टाइम पर मेरा close friend नाम सुना शायद KPS गिल बोल के, Director General of Police Punjab. He had come as a chief guest, and then he saw the crowd in Hyderabad. उन्होंने बोला रेड्डी साहब, this cannot happen even in Punjab बोल के. So मतलब the kind of crowd what we are attracting is enormous. अभी नवरात्रि का चल रहा है यहाँ. पहले हैदराबाद में शुरू करे वक्त ओनली गुजराती सम्मेलन से कम. उसके बाद में देखे तो लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द नॉर्थ, ईस्ट, पंजाब, आंध्रा, लोकल हैदराबाद पीपल हैव जॉइंड द whole festivals. So it depends on how you promote it, because ours is a family clubbing. There are more number of ladies visiting the country club than any other club in the world. I can challenge this, because they feel it is secure, it is a nice place, it is a safe place, and it is a family place. So I mean, और एक बात सुना तो मैं आपको. I'm just talking a few years back. I was sitting on my chairman's terrace at Country Club Hyderabad. एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर रोहित साहब बोल के मेरे को आके मिलने आके बोले, मिस्टर रेड्डी, you are being blessed by God. I said, why sir, what happened? He said, 2 of my nieces and nephews have met here in the Garba and they are getting married. उनका शादी हो रहा, thanks to Country Club बोल के. So how many times you can hear that kind of this thing? It's not because of money. ये पैसों का सवाल ही नहीं है. The fact is because Country Club facilitated their meetings in front of their parents and grandparents. सर, पिछली बार देवलीना और गुरमीत को देखा गया था, स्टार्स आए थे. इस बार कौन से स्टार्स को देखने मिलेगा? A lot of people, in fact, maybe including Devina and Singh also, but we have so many stars, all the top A-listers also will be included. Because a lot of people have shown interest, because Country Club, like Salman Khan has performed in Dubai, Shah Rukh Khan has performed in Dubai, Salman Khan has performed in Bombay and Bangalore, and Govinda has performed, Vivek Oberoi has performed.
Mahima Chaudhary has performed. Hema Malini has performed. Hema Malini performed many years back in Country Club Hyderabad. So name the stars. Most of the stars have performed at the Country Club, and they feel happy with doing in the Country Club because that image is different, no? Because it's a family entertainer, no? आज नवरात्रि पर्व का 7वां दिन है और नवरात्रि बहुत अच्छे से लोग मना रहे हैं और यहाँ कंट्री क्लब में भी अच्छे से मनाई जा रही है। और दूसरा मैं बोरीवली में ऐश्वर्या मजुमदार की नवरात्रि भी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, वो भी बहुत धूमधाम से ऑर्गेनाइज हो रही है। बहुत ही भीड़ है, बहुत लोग हैं। वो नहीं बोल जय माता घोड़े में हैं तो दोनों साथ में डांडिया खेलेंगे ना? हाँ खेलेंगे। खेल लेंगे। मैं विपुल भाई के साथ में जब से नवरात्रि चालू की है तब से माता रानी की सेवा और भाव और उनके जो श्रद्धा है लोगों के लिए कि माता रानी की स्थापना और वो पूजा करना, वो जो है उनको ये परिवार में कोई पुण्य होता है तभी ये लाभ मिलता है। और ये माता रानी की असीम कृपा है कि जिसके कारण जो है कि उनको ये लाभ मिल रहा है और लोगों को ये लाभ दे रहे हैं। ये जो है माता रानी का उनके ऊपर असीम कृपा है तो ये लाभ ले सकते हैं। और ये माता रानी की कृपा की वजह से लोगों माता रानी इनको प्रेरणा करती है और इनके कारण जो है लोगों को आनंद हो। और लोग जो है आपस में कोविड के बाद में पहली बार जो है इतना टाइम के बाद में लोग जो है बाहर निकले और ये आनंद कर रहे हैं। तो इसलिए जो है कहा गया है कि विपुल भाई जो है वो ऐसा मानते हैं कि राइट हैंड से करो, लेफ्ट हैंड को पता ना चलने दो, वैसा लाभ जो है। जय बोलो अम्बे मात की जय। ये नवरात्रि जो मद्रास के लोग हैं, साउथ के लोग हैं, वो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? ये वेंकट जी की वजह से ये नवरात्रि हो रही है, क्योंकि इन्होंने इनके अथक प्रयास से ये नवरात्रि सफल हो रही है। मैं तो ठीक हूँ, सपोर्ट में हूँ, पर बाहर से आके जो लोग यहाँ नवरात्रि कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। वेंकट साहब क्या कहेंगे सर? आप साउथ से आए हो सर, साउथ से आए हो सर, साउथ से आप आए हो, कैसे कल्पना की कि ये करना है आपको? कैसे कल्पना की आपको करना, क्यों साउथ से आप आए हो, कैसे कल्पना की कि डांडिया करना? कल्पना कुछ नहीं है, करने को माता का परमिशन आगे कर लिया, बस उतना है। विपुल सर साथ में जुड़े हैं, क्या कुछ कहेंगे विपुल सर के बारे में? मेरा बड़ा भाई है, भाभी जी है। विपुल सर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है और माता का आशीर्वाद और माता से आदेश आया तब वेंकट सर ने हम लोग को बुलाया और हमने ये शुरुआत की। यस कह रहा हूँ। कुछ आपके आखिर में कहेंगे जो खेलने आए यहाँ पे आ रहे हैं? ये किशोर भाई मेहता है, आपने माणिकचंद नवरात्रि के बारे में सुना ही होगा। बरसों से ये नवरात्रि करते थे। ये नवरात्रि के मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने नवरात्रि सीखी करना। तो लास्ट 15 साल से मैं नवरात्रि कर रहा हूँ ऑर्गेनाइज। आप क्या कहेंगे? मैं तो क्या बोलूँ, मैं जब माणिकचंद में था तब से नवरात्रि चालू किया है, 5 साल नवरात्रि किया है। और वो नवरात्रि में विपुल जैसे अक्षय, रवीना, शिल्पा, करीना, करिश्मा, आपता, परेश, एक की एक जन मेरे नवरात्रि में आते 5 साल। और जो मंदिर बनाता था वो बेचारा अभी मर गया, नितिन देसाई मंदिर बनाते थे हमारे, नितिन देसाई। और उसके बाद मेरे बाद विपुल को मैंने सौंप दिए है। हाँ जी, 15 साल में बदलाव बहुत है। पहले इतना कॉमर्शलाइज नहीं था नवरात्रि जितना आज हो गया है। और अभी इलेक्शन का माहौल है तो सारे नेता ही नवरात्रि में कूद पड़े हैं। तो जो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजर है वो बेचारे साइड ट्रैक है सारे। बोरीवली में जितने बड़ी नवरात्रि है वो हमारे सब बड़े नेता नवरात्रि कर रहे हैं। ये बदलाव है सर, ये आप बीती है, मतलब ये कहिए आप बीती है। हाँ, ठीक है, आप बीती नहीं, सब बीती है। माणिकचंद के टाइम में पहले कोई नेता नहीं हुआ करते थे नवरात्रि में, एज ए गेस्ट आते थे। फाउंडर में था, बोरीवली का फाउंडर ही मैं था। कोरा केंद्र से चालू किया था। और कहाँ आप कर रहे हो? मजुमदार कर रहे हो और क्या कहाँ कर रहे हो? हमारे कंट्री क्लब हो गया, एक मजुमदार हो गया, बस 2 ही जगह पे। आगे क्या प्लान है? कुछ और बड़ा करने कुछ? आगे वेंकट भाई के साथ हमारा 31st ऑर्गेनाइज करने का प्लान चल रहा है, अच्छे तरीके से करेंगे। सर, हमारे एंकर के बारे में कुछ कहेंगे? एंकर दारसी भाई बरड़िया इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, कॉमेडी के ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, हर साल हमारे साथ जुड़े रहते हैं। उनका भी हमारे प्रति बहुत प्रेम भाव है और बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू। विपुल शाह बरसों से नवरात्रि कर रहे हैं और मैं तो इनकी हिम्मत को दाद देना चाहता हूं कि इस माहौल में भी माता की भक्ति भूलते नहीं हैं। हर साल माता रानी की भक्ति करते हैं, कमाने के लिए नहीं करते, सिर्फ माता रानी की सेवा करने के लिए नवरात्रि आनंद देने के लिए, लोगों को आनंद के लिए। और दूसरा
भाभी जी भी माता के लिए, बहुत। हमारी बहन माता के लिए बहुत बहुत बड़ी भक्त है। सभी को नवरात्रि की माता जी ढेरों का शुभकामनाएं। श्रृंगार देखो आप, ये देखो सब बोल भाभी श्री जी लाए। अम्बे माता की।